प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मिजोरम पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने बैरागी सैरांग नई रेल लाइन के शुभारंभ के साथ मिजोरम में 9,000 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मिजोरम ने हमेशा देश के विकास के लिए अपना योगदान दिया है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। Friends, whether it is the freedom movement or nation building, the people of Mizoram have always come forward to contribute. The ideals of people like Lalnu Ropai Lianji and Pasaltha Khuangchera continue to inspire the nation. Sacrifice and service, courage and compassion, these values are at the center of Mizo society. Today, Mizoram is playing an important role in India's development journey. Friends, this is a historic day for the nation, particularly for the people of Mizoram. From today, Aizawl will be on India's railway map. इस मौके पर पीएम मोदी ने जीएसटी में हुए रिफॉर्म्स का जिक्र किया और कहा कि नए रिफॉर्म से लोगों को यात्रा करने में सहायता मिलेगी। Friends, as part of the reforms, GST on most hotels has been reduced to only 5%. Traveling to various places, staying in hotels and eating out will become cheaper. This will help more people travel, explore and enjoy different parts of our country. Tourist hubs like the Northeast will particularly benefit from it. Friends, our economy has seen a growth of 7.8% in the first quarter of 25-26. It means India is the fastest growing major economy in the world. We are also seeing the growth of Make in India and exports. पीएम मोदी ने कांग्रेस के शासन को भी याद दिलाया और महंगाई का जिक्र करते हुए निशाना साधा। During Congress rule, medicines, test kits and insurance policies were heavily taxed. That is why healthcare was expensive and insurance was out of reach for ordinary families. But today, all these have become affordable. The new GST rates will also make medicines for serious diseases like cancer more inexpensive. इसके अलावा पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया के तहत बने हथियारों का जिक्र किया और भारतीय सेना की तारीफ की। During Operation Sindoor, you all saw how our soldiers taught a lesson to those who sponsored terror. The whole nation was filled with a sense of pride about our armed forces. In this operation, Made in India weapons played a significant role in protecting our country. The growth of our economy
and manufacturing sector is very important for our national security. इस उद्घाटन के बाद पहली बार मिजोरम सेरांग ट्रेन द्वारा सीधा दिल्ली से जुड़ जाएगा। इससे मिजोरम के लोगों का जीवन और आजीविका बेहतर होगी। पीएम मोदी ने लेंगपुई हवाई अड्डे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेरांग बैरागी रेलवे लाइन का उद्घाटन किया।